Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I'm Hema Choudhary and I welcome you all to the current affairs series by our channel Pratham Test Prep. I hope you all are doing good. You all are doing fine. Hi, everyone. How are you? So in today's session, we will be doing the current affairs of last 2 days. And for that, I'll be sharing the screen with all of you. Just a second so that we can start sharing it in the full screen. And I hope you can see the PPT, that too in a full screen. The slide is visible, that too in a full screen. So if we talk about today's session, as I said in today's session, we will be covering the current affairs of last 2 days, that is 7th and 8th March 2022. Those students who are preparing for law exams in CLAT, ILET and other law exams, they can join our Telegram channel with the name CLAT at Pratham. And those students who are preparing for management exam, they can join our Telegram channel with the name IPM-IIM Test Prep. On these Telegram channels, you can find the important study material for practice, right? And for regular revision. Along with that, you can also find the regular updates related to the exams, right? Practice questions, etc. Now, if you guys are new to these current affairs session, then we come live with the current affairs session on 3 days in a week, which is Monday, Wednesday, and Friday, and the timing is at 7 p.m. right? Along with these current affairs session, we also provide you the legal current affairs session on the same 3 days, Monday, Wednesday, and Friday, and the timing is 3 p.m. right? Iske alawa, we are also offering so many important videos, right? Important, we can say that updates related to the upcoming exams and everything. So to know about the upcoming videos, what you need to do is press the bell icon so that you can get notification of all the upcoming videos. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ. एंड हमारे आज के सेशन की पहली न्यूज है about an important day which is International Women's Day. कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल Women's Day? The answer is 8th March. 8th March of every year. So if we talk about the important day which is being observed on 8th March, कौन सा है वो? International Women's Day. So we observe International Women's Day on 8th March. आपको इसमें क्या क्या पॉइंटर्स याद होने चाहिए? That International Women's Day is being observed every year on 8th March, right, as a symbolic reminder of the historic journey that women have taken globally. Ma'am, if for example DU-BMS is in September, then current affairs from September of the past year are enough, right? No, Sia. बच्चे आपका जो ईयर स्टार्ट हो जाता है जिससे कि आपको करंट अफेयर्स राइट इंपॉर्टेंट पढ़ना जरूरी है. ठीक है, आपका अगर सितंबर में होता है, लेट्स सपोज हम सितंबर की बात कर लें, तो बच्चे फ्रॉम पास्ट ईयर्स पेपर जो हमने एनालाइज किया है वो ये है कि फॉर DU-BMS लास्ट ईयर के जुलाई से आपका पढ़ना इज इम्पोर्टेंट. अप्रैल में जून का ब्रीफ आइडिया होना चाहिए. जुलाई ऑनवर्ड्स आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ आने चाहिए, चाहे फिर वो जुलाई टू जुलाई हो या जुलाई से आगे अगस्त सितंबर भी उसमें ऐड हो जाए, लेकिन आपकी बिगिनिंग जुलाई ऑफ द पास्ट ईयर आपका होना जरूरी है. हाय अंशिता, आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? राइट. सो इम्पोर्टेंट डे इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे. द डेट इज 8th March. एंड मैंने हमेशा बताया आपको थीम याद रखना इज इम्पोर्टेंट. सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 की जो थीम थी, द थीम फॉर द ईयर 2022 वाज जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी टुडे for a sustainable tomorrow, and this theme was declared by United Nations Women. ठीक है, उसका जो women part है उसने डिक्लेयर किया है. सो मेनली 3 ही चीजें इसमें याद रखनी है. डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, डेट 8th March, and the theme for the year 2022, the theme is gender equality today for a sustainable tomorrow. किसने डिक्लेयर किया? यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने. आई होप क्लियर है सारे पॉइंट्स. इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8th March, theme is gender equality today for a sustainable tomorrow. This theme was declared by UN Women, and first time जो International Women's Day observe किया गया था, it was in 1911, right? So we can say that
the International Women's Day has been celebrated globally for over a century now. More than a century now. Clear है ये सारे points? Mainly 3 याद रखना है, day, date and the theme. Good evening Aditya. Day, date and theme. International Women's Day 8th March. Gender equality today for a sustainable tomorrow. Declared by UN Women. I hope the first news is clear to everyone. So we can move to the next news. Right? देखते हैं अपनी अगली news क्या है. And the next news that we have for today's session is about Russia. So Russia has become the world's most sanctioned country. Now क्या मतलब है जब हम बात करें यहाँ पे रशिया की, and हम ये कह रहे हैं that most sanctioned country वो बन चुका है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे sanction की बात करें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that when any country is being declared as sanctioned, right, by any country, for example, let's say एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी इसी का, that United States, right, United States has imposed sanction over Russia. क्या मतलब है इसका? To make valid, or you can say, to binding usually by a formal procedure of anything. ठीक है? या फिर जब हम बात करते हैं इस चीज की तो आपका सिंपल है, there will be some kind of regulations imposed, right, on that country. ठीक है? क्लियर है? तो आप ये कह सकते हो सैंक्शन इन बेसिक टर्म, अगर आपको इस लैंग्वेज में नहीं समझ आए, सैंक्शन इन बेसिक टर्म इज अ पेनल्टी फॉर एनी रॉन्गफुल एक्शन. ठीक है? सैंक्शन टू एनी कंट्री इज अ काइंड ऑफ पेनल्टी फॉर इट्स रॉन्गफुल एक्शन. ठीक है? क्लियर है बेटा? व्हाट एग्जैक्टली इज द सैंक्शन वर्ड मीन्स हियर? क्लियर है सबको? So Russia became the most sanctioned country in the world. ठीक है? Most sanctioned country in the world. किसने ये डिक्लेयर किया है? Counselling.ai, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड sanction watch list साइट है, उसके अकॉर्डिंग रशिया हैज नाउ बिकेम द मोस्ट sanctioned country in the world, right? जिसमें कि आप ये कह सकते हो मोर देन 5000 crippling sanctions हैं, राइट? 5000 से ज्यादा सैंक्शंस हो चुके हैं रशिया के, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट? नाउ नेक्स्ट आपको ये याद रखना है दैट कि जब हम बात कर रहे हैं तो रीसेंट इसका क्या मतलब है, रिसेंटली किसने किया है. ठीक है? अब जब हम बात करते हैं, अब काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्रिपलिंग सैंक्शन, या फिर व्हाट आर दीज क्रिपलिंग सैंक्शंस, होता क्या है? ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? पहले जैसे मैंने आपको बताया, sanction in the normal sense of the word, it means to allow something or someone to do what they will or to act on their behalf, etc. And to sanction in the political sense of the words means not to allow anything or to put a kind of penalty for the wrongful action. ठीक है? इकोनॉमिक टर्म में अलग हो जाता है सैंक्शन का मतलब, पॉलिटिकल टर्म में अलग हो जाता है. यहाँ पे हम जो रेफर कर रहे हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल. ठीक है? दैट मीन्स अ पेनल्टी फॉर दी wrongful deeds, right? या फिर आप कह सकते हो means not to allow something to do what they will. ठीक है जी? ये चीज समझ आया? एंड दिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी कंट्री ऑल्सो. ठीक है? दिस डिपेंड ऑन दी कंट्री ऑल्सो. ठीक है? हाँ जी, क्लियर है बेटा? आगे बढ़े. चलो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो sanctions were first imposed by United States and its allies on Russia, right? कब? A day after the president of Russia, Vladimir Putin, declared the two Ukrainian rebel regions of Donetsk and Luhansk as independent state. ठीक है? एंड अभी तक अगर हम बात करें 2754 2754 sanctions were already in place against Russia before, right? And अभी additional कितने हो चुके हैं? 2778 additional were imposed in the days following the assault, जिससे कि टोटल अब कितना हो गया है? 5532, and it brings Russia at the position of the most sanctioned country in the world. And the next most sanctioned country in the world is Iran. So most sanctioned country में Iran is at second position.
टोटल कितने टारगेटेड सैंक्शंस हैं इसके? 3616। थर्ड पे है सीरिया, राइट, विद 2608 sanction, and then we have North Korea with the number 2077. So world's most sanctioned country is Russia. पहले कितने थे? 2754, रीसेंट अभी कितने में? 2778, ठीक है। देन सेकंड पे कौन है? ईरान। थर्ड पे कौन है? सीरिया। एंड फोर्थ पे कौन है? नॉर्थ कोरिया। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है, रशियन प्रेसिडेंट का नाम। कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को, करेंसी ऑफ रशिया रशियन रूबल। तो आपको ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए दैट रशिया became the world's most sanctioned country in the world according to Counselling.ai, which is a New York based sanctions watchlist site, right? Second, अगर हम बात करें, sanctions were first imposed on Russia by whom? United States and its allies, right? कब? A day after President Vladimir Putin declared two Ukrainian rebel region, Donetsk and Luhansk, as the independent state. ठीक है जी। सेकंड पे कौन है? ईरान। थर्ड पे सीरिया। फोर्थ पे नॉर्थ कोरिया। ये पॉइंटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए, सो इसके साथ कैपिटल, प्रेसिडेंट एंड करेंसी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यू ऑल नो, देन कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल, राइट। सो ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है हमारी सेकेंड न्यूज में। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, एंड नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन अपॉइंटमेंट एट दी post of president of the FATF. FATF stands for Financial Action Task Force. किसको अपॉइंट किया गया इसके प्रेसिडेंट की पोस्ट पे? टी राजा कुमार. So T Raja Kumar, a Singaporean, right, a person from Singapore, has been appointed as the president of Financial Action Task Force, which is a world's, क्या है ये? Which is the world's anti-money laundering and anti-terrorism financing एजेंसी। कितने टाइम के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? फॉर 2 years टर्म, राइट, फॉर 2 years टर्म। एंड किसको सक्सीड किया है? मार्कस प्लेयर ऑफ जर्मनी। किसको सक्सीड किया है? मार्कस प्लेयर ऑफ जर्मनी। ये पॉइंटर्स आपको याद होने चाहिए। एंड टी कुमार राजा इज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द सिंगापुर टू अज्यूम द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको मेनली ये याद रखना है। द नेक्स्ट, you need to remember where is the headquarter of FATF. So Financial Action Task Force ka headquarter is at Paris, France. Repeating all the points again, who has been appointed as the president of FATF, which stands for Financial Action Task Force. President कौन है? T Raja Kumar. From which country? Singapore. किसको replace किया? डॉक्टर मार्कस प्लेयर को। वो किस कंट्री से हैं? जर्मनी, राइट। कितने टर्म के लिए? कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सिंगापुर से कोई प्रेसिडेंट बना है, एंड द हेडक्वार्टर इज एट पेरिस, फ्रांस, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, जो कि वर्ल्ड की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है, राइट। इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? टी राजा कुमार। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर। कितने सालों के लिए चूज किया गया? 2 साल। किसको सक्सीड किया? डॉक्टर मार्कस प्लेयर को। वो किस कंट्री से हैं? जर्मनी। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सिंगापुर से कोई प्रेसिडेंट बना है FATF का। एंड वेयर इज द हेडक्वार्टर? Paris, France. What is FATF? What is the full form of FATF? Financial Action Task Force. So इस एक पर्टिकुलर साइट से कितनी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको पॉइंटर्स के रूप में डिस्कस करवाया। आई होप सबको क्लियर होगा जो भी मैंने बताया। आई होप सबको क्लियर होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव is, the next important news is about the World Race Walking Championship. स्पोर्ट्स न्यूज है। वर्ल्ड रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में इंडियन विमेन टीम ने हिस्ट्री बनाई है विद इट्स मेडन मेडल, राइट। सो अगर हम बात करते हैं, आपको ट्रायो नाम याद होना चाहिए, किन 3 ने बनाया है? भावना जाट, Ravina and Monita Prajapati. They scripted history by winning the country's maiden women 20 kilometers team medal. कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक्स
race walking team championship. Why this news is important? Because this is the first time के इंडिया की तरफ से किसी ने मेडल जीता है. ठीक है. So this was the Indian women team's first medal in 61 years history of the world's athletic race walking team championship. So race walking team championship में पहली बार इंडियन टीम ने मेडल जीता है, विच इज ब्रॉन्ज. किस किसने जीता है? भावना जाट, रवीना प्रजापति एंड मुनीता प्रजापति. ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए. ठीक है. सो अगर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर एंड गोल्ड किसने जीता. तो चाइना ने जीता है गोल्ड मेडल, ग्रीस ने जीता है सिल्वर मेडल. ये आप याद रखेंगे. एंड रवीना प्रोड्यूस द बेस्ट फिनिश बाय एन इंडियन in the women's 20 kilometer event at 14th spot with a time of 1 hour 40 minutes and 22 seconds. मेनली आपको ये याद रखना है. ठीक है. मेनली आपको ये याद रखना है. तो ये विमेन टीम की तरफ से पहली बार मेडल जीता गया. कौन सा? ब्रॉन्ज. किसने? भावना जाट, रवीना एंड मुनीता प्रजापति. किसमें? वर्ल्ड एथलेटिक रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप, विमेन टीम चैंपियनशिप में. ठीक है. अगर इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है तो गोल्ड एंड सिल्वर भी पता होना चाहिए. गोल्ड किसने जीता? चाइना. सिल्वर मेडल किसने जीता? ग्रीस ने. एंड बेस्ट फिनिश किसने किया? रवीना ने. कितने टाइम में? अगर हम टाइम की बात करें 1 hour 40 minutes 22 seconds. क्लियर है बेटा सारे पॉइंटर्स? तीनों नाम कौन सा मेडल किस इवेंट में फर्स्ट टाइम है एंड गोल्ड एंड सिल्वर मेडल किसने जीता, आपको ये सब पॉइंटर्स पता होने चाहिए. क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप सबको क्लियर है यहां तक. राइट. देखते हैं अपनी अगली न्यूज. एंड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ बुक. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ बुक जिसको किसने रिलीज किया है? RBI, Reserve Bank of India. So it has released a booklet, not a book, rather a booklet, right? With the title Be Aware, right? Be Aware on the modus operandi of financial fraud. So simple है. Be Aware नाम की एक बुकलेट रिलीज हुई है. किसने की? RBI ने. किसने की? RBI ने. Right? It features common modus operandi, right? Used by fraudsters and precautions. Simple सा है. फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, राइट, वो जो तरीके अपनाते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स करने के, उनको इसमें बताया गया है. एंड उनसे किस तरह की प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए व्हाइल कैरिंग आउट वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो सब इसमें लिखा गया है. क्यों लाई गई है ये बुकलेट? टू एनहांस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, राइट. सो डिजिटल पेमेंट्स हो गया आपका, अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया. तो ये जब हम लोग करते हैं उस टाइम पे देयर आर चांसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, राइट. तो उनको उनसे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो लाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बुकलेट रिलीज की है विद द टाइटल बी अवेयर. तो आपको ये पता होना चाहिए दैट बी अवेयर बुकलेट हैज बीन रिलीज बाय विच बैंक? तो आंसर इज RBI. क्लियर है यहां तक? एंड वी ऑल नो दैट कोविड-19 के चलते, लॉकडाउन के चलते पिछले 2.5-3 साल से डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. इट गेन्ड इट्स मोमेंटम, राइट. अगर हम पिछले 2-2.5 साल की बात करें तो इसलिए ये अवेयरनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए RBI ने ये बुकलेट रिलीज किए विद द टाइटल बी अवेयर. नाउ ओके, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू बिकॉज हमने RBI के बारे में पहले भी पढ़ा है. तो क्विकली टेल मी दैट RBI was established in which year? I want quick answers in the chat box. जल्दी से बताइए. RBI, Reserve Bank of India, was established in which year? ये हम पहले बहुत बार कवर कर चुके हैं. So I'm not writing it, but I'll ask questions related to it. हाँ जी बेटा बताइए आंसर. RBI was established in which year? (1935). वेरी गुड. क्या है आंसर? 1935. वेरी गुड ईशा. एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स. यस अनुष्का. यस क्या है बेटा आंसर? 1935. नाउ टेल मी द ईयर ऑफ nationalization of RBI. RBI was nationalized in which year? RBI was nationalized
In which year? RBI was established in 1935 on the recommendation of Hilton Young Commission after passing the RBI Act 1934. Now my question is, RBI was nationalized in which year? (1949). Very good, Isha. क्या है बेटा आंसर? 1949. Now tell me the name of the current governor of RBI. Who is the current governor of RBI? Who is the current governor of RBI? Yes, Goishika. Yes, Bhavishya. 1949 is the correct answer of the previous question. Now my question is, who is the current governor of RBI? Very good, Sia. Shaktikanta Das. कौन है? Shaktikanta Das. Yes, Shivam. Yes, Isha. Now tell me the name of the first governor of RBI. Who was the first governor of RBI? Who was the first governor of RBI? सबसे पहले गवर्नर कौन थे? Yes, भुवन. शक्ति भाव. हाँ जी, सबसे पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. जल्दी से बताइए बेटा, फर्स्ट गवर्नर. सर ऑसबॉर्न स्मिथ. कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई was Sir Osborne Smith. Who was the first Indian governor of RBI? That is my last question related to RBI. Who was the first Indian governor of RBI? First Indian governor of RBI. बताइए जल्दी से. First Indian governor. सी डी देशमुख. कौन थे सबसे पहले इंडियन गवर्नर? सी डी देशमुख. राइट. कौन थे बेटा? सी डी देशमुख. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू आरबीआई जो कि आपको पता होने चाहिए. राइट. एंड इसी के साथ बेटा आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है खत्म, क्योंकि लास्ट 2 दिन का ही करंट अफेयर्स था. नाउ इन नेक्स्ट नॉट फ्राइडे सेशन, मंडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें वी विल बी डूइंग द मेंटी क्विज ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. मैं अभी डिक्लेयर कर रही हूँ. याद कैसे रखे इतने सारे नाम? बेटा राइट डाउन द नोट्स. राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखो. 3 बार अच्छे से उसको आप रिवाइज करोगे, आपको याद रहेगा. ठीक है. 3 बार अच्छे से रिविजन करोगे, आपको याद रहेगा. ऐसा नहीं है 3 बार रिविजन एक ही दिन में कर लिया. आज एक बार करो, फिर 5-6 दिन बाद दूसरी बार करो रिविजन, फिर उसके भी 5-6 दिन बाद एक बार और रिवीजन करो. सो इन अ गैप ऑफ 15-20 डेज अगर आपने 3 बार प्रॉपरली छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख के उसको रिवाइज कर लिया, ट्रस्ट में आपको याद रहेंगे. ठीक है. चलिए. सो बच्चे आपका जो मंडे को सेशन होगा उसमें वी विल बी डूइंग द मेंटी क्विज ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022. That's all for today's session. I hope you enjoyed the session. If yes, do show your love and support by liking the video, sharing the video, subscribing the channel, and most important, press the bell icon so that you don't miss out for any updates, right, of the upcoming videos. So bye everyone. Bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. Right. And most important, जैसा मैम हमेशा बोलती हैं, keep revising.